Hello guys, welcome back to our channel. And after a good gap, we have realized that we are supposed to record another video, which is the part 2 of IPL auction. In this video, we'll cover the remaining 5 teams. First of all, before recording this video, we have to go back in our video, the first part, and we have to find out which teams did we cover. After doing that, we are back here again, and in this video, Shardul will go all out and express his express his inner feelings about a team who had the amazing amount of purse, nearly 60 crores of purse in this auction. And we'll talk about that team later. So we'll first talk about KKR. So Shardul, finally Green is at the Gardens in Kolkata. So Green what do you at the feel? Gardens. So, KKR probably for a player like Green, 25 CR is absolutely justified. Absolutely justified. पर ब्रो Because 25 में से 7 तो BCCI को जाएंगे, 18 ही मिलेंगे उसको. अरे उसको 18 मिलने देना. केकेआर के बाप का क्या जा रहा है? They only care about bringing Green to the squad. And Yeah. also, just to highlight a fact, MI did a class thing by showing the baton even if they did not have the purse. That was a Yes, class thing to do. at 2.35 CR, MI lifted their paddle to bid for Green. And it was Yes, the first time where Ambani was short of money. this is and that will only remain the last time that it ever happens. For real. But apart from that, KKR solid squad once again. I believe it's a very, very, very good squad. Yeah. Not see, they have signed Rachin Ravindra at the steel deal for sure. Yeah. I believe I believe at a place like Eden Gardens, now Rachin Ravindra is going to kill it. He's going to Yeah. kill it, and he And plays actually spin really Shardul, well. yeah. Yeah. And He plays spin I will really well. see, yeah. 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 So talking about the purchase of Pathirana, I feel Pathirana Yeah. got a little bit more on a higher price. Matlab he would have been like he was good by at a rate of like 10 to 12 CR, to be seriously honest. 10 to 12 Because CR. That's a good. yeah, with the That's a amount huge which call to KKR make. gave him, yeah, exactly. Because भाई देखना तो technically KKR has a good pace attack. Okay, Yeah. Yeah. even if you remove Pathirana, they still have a good uh, pace attack. They have Harshit Rana, they have Akashdeep, they have brought in Akashdeep, they have brought in Umran Malik, and all that stuff. So they have tried to get a lot of fast bowlers, and they also had Vaibhav Arora with them. And the to be seriously honest, KKR is the like Shardul, you would agree with me ki KKR has the balance of experience and as well as youngsters in the squad. And a Yeah. captain Yeah. and a Yeah. Yeah. captain like yeah and a captain like Ajinkya Rahane can utilize those youngsters to make a great impact, because But youngsters I like feel that yeah they are again missing. They are again missing like a proper. See, I get the batting is really really good, but still they are missing a proper है ना hitter. ब्रो. या आफ्टर रिलीजिंग Gone. रसल सुन शार्दुल, एनीवेज रसल को रिलीज करने के बाद दे उनको एक वो फॉरएवर का एक वो है, मतलब यू एज यू आर एम आई फैन, यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि ब्रो as Pollard retired, like when he stopped playing for Yeah. MI, after that you have seen that KMI has been lacking in the finishing. Though they have Hardik Pandya, though they have Tilak Verma and all those stuff, and for a moment they also Yeah. had Green. So Yeah. that's Yeah. at the Yeah. end of the day, I'll say that's the West Indies power, I would say.
that you actually need a West Indian as a finisher which suits you. And he's also lucky kind Would of you thing go for for you. Robman Powell though? Would you go for Bro, Robman Powell? that's what I'm saying na कि भाई you need a Caribbean player, so we have brought in Rovman Powell. That's not a like for like comparison because But Powell no, does not even Shardul, come close to the Powell was there impact, last year as well. Bro, Powell was there last year as well. No, Powell was in RR Yeah, back in he was. 2025. He played one game, I Yeah. guess. So they No, actually Shardul. he played almost every game. He Yeah, played almost yeah, every game, I think. And but he was very much lacking in the finishing. So if they're signing him yeah, for the finishing part, his form does not speak for himself, first of all. yeah. But Shardul, And second, what do you think about a buy like Rahul Tripathi? What would be the reason? I genuinely think it's a mistake. It's a mistake. Because Shardul, Because I, technically, Rahul Tripathi and Manish Pandey both play similar kind of cricket. yeah, Like both are the but both of them typical are anchors of the innings kind of. stabilizer. Yeah, Yeah, stabilizer. But I believe that they should. th- But I feel this is a very bowling oriented, thing. But yeah, for finishing, they have two people now. I hope they fire because I yeah. genuinely Green, like yeah, KKR a lot. yeah. They have no, not Green. I believe Green is a in at three batter, peak in Yeah. at three bat. Oh, So Shardul, he would let's come at let's say they four. start with, फोर yeah, में भी three or बिकॉज four, yeah, सुन ना नहीं नहीं 3 or 4. राहुल नहीं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सुनील नारायण विथ अंगक्रिश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे देन एट थ्री इट विल बी मनीष पांडे और राहुल त्रिपाठी देन एट फोर दे विल ब्रिंग इन ग्रीन फिर So पांच पे let's आएगा नहीं assume दे Rahane plays ऑल्सो all the हैव games. या But Raghuvanshi will play very late because Raghuvanshi, it's either he will open or it's either he will play in the lower middle order. नो बट शार्दुल ही इज यूजुअली अ टू और थ्री प्लेयर लाइक either he'll come at He is three a or two or maybe three, at but four. you saw last season what they did with him. Because Yeah. in a squad with, see, I don't know whether Sunil Narayan open bhi karega ki nahi in this time. Who knows what the tactics will be? पर Because they शार्दुल have उनका clearly वो gone नहीं for if openers. या Openers. पर शार्दुल even if they go for an opener without like with excluding नारायण ना वो उनको ओवरसीज ही लेना पड़ेगा फिर वो उनका एक शॉर्टेज Yeah, होगा क्योंकि ग्रीन तो पक्का खेलेगा सो ही इज द फर्स्ट Green, ओवरसीज yeah. And फर्स्ट विल बी when ग्रीन see, सेकंड विल बी but पथिराणा थर्ड विल बी सुनील नारायण and fourth will be Rachin Ravindra, hopefully. Yeah, either I it mean, will be Rachin Ravindra or maybe Tim Shepard. अगर Team उनको Saifat. और नीचे Team Saifat. yeah, if they have to go for someone like number 5 or number 6 But और कीपर कौन है इनका this it will कीपर keeper Powell ही है ना? नहीं एक्चुअल रघुवंशी कैन कीप ना Yeah, Raghuvanshi can keep and wait. Did they? Who was the keeper? Damn, where is the keeper? I mean Shardul it will be Time Shepard then because he I is a mean, yeah, keeper. Team Seifert. Team Seifert Yeah, would be, yeah. Team Seifert and even Team Finn Allen Seifert is and a keeper Roman I Pom. guess. Yeah, but Finn no, Allen he keeper would है. keep. I think Yeah. Team Seifert. Who knows, man? Who knows? पर शार्दुल I इनका पेस depend. अटैक तो सॉर्टेड है Yeah, वो इंडियन भी pace है attack. ओवरसीज भी है आकाशदीप है And हर्षित राणा है I वैभव अरोरा उमरान मलिक and Mustafizur. How are you forgetting Mustafizur? या मुस्तफिजुर बट ब्रो अगेन ही इज अ हिट और मिस टू बी सीरियसली ऑनेस्ट He's a hit or miss, definitely, but let's see. I mean, but I know Pathirana will definitely now that they या have bought him पथिराणा for an हैज टू extra. डिलीवर But how पथिराणा can हैज टू CSK डिलीवर let Pathirana go? I don't understand. How? शार्दुल How? अभी सुन ना केकेआर के स्क्वाड में अभी 4 सीएसके के लोग आए हैं Correct. 4 या 3 3 3 Wait. राहुल Who त्रिपाठी or who? रचिन रविंद्र एंड
Patirana. Yeah. Right. Wow. And all three of them were performing for CSK. मतलब not Rachin Yeah. Ravindra, definitely not Rachin Ravindra, Yeah. but पर इवन राहुल त्रिपाठी भी नहीं था परफॉर्मिंग भाई. इट वॉज ब्रेविस द ओनली it द ओनली रेस्क्यू फॉर देम. दे ब्रेविस इस सीजन का भी उनका वही रहने वाला है, वही करेगा रेस्क्यू, और कोई नहीं कर सकता या रेस्क्यू या उनको. बट शार्दुल, आफ्टर सीइंग दिस स्क्वाड मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट, थोड़ा बैकअप्स नहीं है इनके पास. हाँ, दे जस्ट हैव वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण. बट वो दो ही बहुत है रे, प्रॉब्लम है. या But they would have to rely on 100%, their fitness. And even Rachin Ravindra can ball, na? So Rachin Ravindra या can ball. ऊपर से I think Anukul Roy is a spinner, right? ब्रो वो एमआई का बंदा है ना. I have to wait. या आई गेस ही इज अ Is स्पिनर. yeah, बट ही इज yeah, नॉट अ he's a प्रूवन spinner, slow प्रूवन left arm. स्पिनर ना. ही अरे इज नॉट अ proven है प्रूवन स्पिनर भाई. ना. He है has 133 first class wickets. ब्रो. नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल ना. आईपीएल का भी है ना सीन. T20 में उसके 56 विकेट्स है, सो हाँ ठीक है. फिर ठीक है. देन ही विल बॉल. देन ही विल डेफिनेटली हाँ, बॉल दिस टाइम. yeah. So they So have so options. It's KKR, not like they. yeah. So KKR is pretty much sorted if just we leave the criteria of spinners. And also they have Akashdeep, right? We are forgetting Yeah, Akashdeep Akashdeep, as well. yeah, we took it, yeah. Akashdeep. Akashdeep को लिया So हमने. look at the pace department now. Harshit Rana, Yeah, Akashdeep, Umran Malik, Mustafizur, Mahisha Vaibhav Arora Patirana, Cameron Green, Vaibhav and Arora, Vaibhav Arora uh, and Kartik Tyagi. Karthik Tyagi. तो है. Eight पेस pace डिपार्टमेंट इज bowlers. प्रिटी कूल. पेस डिपार्टमेंट उनको से कोई लगेगा ही ना. प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. नहीं, उनको लगेगा केकेआर में, कोलकाता में, एंड उनको इवन लगेगा फॉर ऑफ मुंबई. कोर्स. मुंबई में भी लगेगा. मुंबई को तो बहुत, मुंबई का स्क्वाड रहने दे ब्रो. मुंबई का स्क्वाड इज परफेक्ट टू द नहीं ब्रिंक. नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पेसर्स टू प्ले इन मुंबई, लाइक पेसर मुंबई इन वानखेड़े. वो वानखेड़े में पर खेलने के लिए. they have already got three and they don't need to rely on more, to be honest. या But it's always good to have all rounders. या So now बट शार्दुल KKR is done, ओवरऑल, I think. So let's rate the ओवरऑल squad. शार्दुल नहीं, सुनना ओवरऑल राइट नाउ तू वरुण चक्रवर्ती को छोड़ा. तू वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ओके, इन Hmm. दोनों को अगर तू थोड़ा साइड में रखेगा फॉर सम टाइम, इस स्क्वाड में कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, लाइक हु आर लाइक इन देयर पीक फॉर्म. In their peak, and the second thing is all of them are secondary options in their respective एग्जैक्टली. teams. बिकॉज सुनना, यू डोंट हैव गेम एनी टाइम ही आइडिया नहीं. अबाउट उमरान मलिक. उमरान मलिक का फिटनेस का सीन है. आकाशदीप का भी फिटनेस का सीन है, बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड आफ्टर अक्टूबर और सितंबर या अक्टूबर के बाद वो खेला नहीं है टेक्निकली, बिकॉज ही प्लेड हाँ, लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश. वो थे ना दो करेक्ट. अपने टेस्ट मैचेस. उसके बाद वो खेला नहीं है. सो लाइक 5 ऑफ दोज पेस, 4 इंडियन पेसर में से दो के आगे क्वेश्चन मार्क है. एंड इवन वैभव करेक्ट. अरोरा कितना खेला है, आई एम नॉट श्योर. I mean, I know this is a hit or miss team altogether, but still, या it is what it बट is, इट्स and प्रीटी गुड. मतलब ऑल it's डिपार्टमेंट्स pretty. आर कवर्ड विद प्रॉपर Yeah, प्रिकॉशंस. yeah. सो शार्दुल, व्हाट्स योर रैंकिंग फॉर देम आउट ऑफ 10? Just because everybody is out of form right now, I would give it a 7.5 out of 10, because form is a very important thing for me. Like going in a huge tournament like this, I know forms can be regained because of the game time that's happened, but if you don't have form, you don't have the confidence to win sometimes, and Yeah, that could lack on the. Not every team is Mumbai or CSK to bounce back from consecutive losses. So I'll be yeah, really honest. KKR needs those early wins to set up the momentum, and it yeah, does happen. So it's all yeah. For but me, it's yeah, 7.5 out of 10. yeah, and for me it is 8.5.
But to be seriously honest, ठीक है, पैसे they had a good amount of purse of something around 43 या 45 करोड़ का, and तो have managed 55 well. ना, नहीं, 40 था, 55 55 43 था, 43. CSK was 60, 62 कुछ तो था. नहीं, They had 43. KKR was 64, KKR was 64 and CSK was 43. ओह हाँ, रिवर्स. ओके ठीक है. Yeah, हाँ, reversed. देन भाई 60 के लिए ब्रो इट इज ठीक है. After listening Yeah, to this squad, I will just give 8.5 just because players are good and overall it's hit or miss as you said. It's like, yeah. but I think, I think they are not a side to qualify. To be seriously honest, like हाँ, अगर तूने बाकी टीमों को देखा तो they are not in a position to maybe qualify. Like on correct, as correct. per as of right now to be honest. But मैच में या सीजन में जैसा कुछ होगा वो उसके बाद में. Right. So, but yeah, let's see what happens now. And now for the second team, we are having Rajasthan RR, Royals. So Rajasthan Royals. after a miraculous and unexpected trade of Sanju Samson and getting Ravindra Jadeja and Sam Curran, Shardul, do you think it is a steal? I absolutely don't think it's a steal. Sorry. I'll be really honest. Jadeja, all respect to Jadeja, but he Yeah, is yeah, now gone out of the T20 zone. I don't think yeah. so. Trading Sanju Samson for Ravindra Jadeja could be one of the biggest fatal mistakes in my opinion, because you are giving one of the Yeah, most informed players to CSK, and you're taking a player who has taken T20 retirement just now. So, and also a player who has exactly. not Bro, performed just in the imagine IPL na. Sun. 2025. Yeah. Yeah, Shardul, just imagine Sanju Samson goes like all way in the World Cup and goes among the top scorers for India. फिर क्या होगा देख तू. That would be like a master stroke by CSK. Exactly, steal, like more than steal. Still, So but I talking don't about the squad. have any I don't have any hopes from RR at all. At Yeah, all. because at all Shardul, more than not at all is like not a, it's like a negative word, but they don't have a they have a lot of options for a captain, but they all are like okay. रियान पराग वो अपने फॉर्म में उसका ऊपर नीचे होता है, but and he hasn't proved himself in captaincy as well. So that's also issue कि RR could lack a good captain. Yeah, yeah. So for them, it is important to select a proper captain and make sure that he's a perfect captain. कि maybe it could be But Jurel, it could be Riyan Parag ही Jadeja, it करेगा could be captaincy. okay. But Riyan Parag ही but करेगा Shardul, captaincy. but I'll tell you that after that trade, RR still managed to get a lot of good players. Bringing They in Ravi did. Bishnoi is like a perfect what we say. So in like a perfect steal to be honest, because अब देखना तो इनका spin department भी is perfect. You have रवि बिश्नोई, अपना विघ्नेश पुथुर है, जडेजा है. So and all three are like all the two of them, Bishnoi and Jadeja are in pretty good hey like what Bishnoi, we say. Jadeja, Puthur. Yeah. And also But the Shubham Dubey also bowls spin. Even yeah, Riyan Parag bowls but spin. I don't. The thing is, I don't see any. I don't see any match winner रे इस टीम में. Like I है can ना I ब्रो, can bank on. जायसवाल है ना. अरे एक एक बंदा मैच नहीं जीता सकता ब्रो, एक नहीं बंदा जीता सकता मैच. I'll tell you very honestly, I can see Vaibhav Suryavanshi with that fire. I can see Jaiswal with that fire. Yeah. But all together in accordance to the IPL, let's say अभी तुम्हारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में जॉफर आर्चर है जो 150 की स्पीड पर डालेगा, मेरे को बता उसका. But he is not giving any output. He's a trash ball. No, sorry, that's a very harsh word. But he's a
he has proven to be a liability for teams, for whoever he has Yeah, signed. And it is a disastrous, disastrous decision to, like, not go for. उसको retain क्यों किया है, मेरे को ये जानना है. On what account, on what basis has yeah. Jofra Archer been As you retained? said, Shardul, as you have as you have said कि Jofra Archer has been retained, I also should say कि bro Shimran Atmar, he hasn't done anything, like He literally. has, for the literal last 3 years, he has done nothing. He has Yeah. only done one And good Shardul, season, that as is you 2022. even if Shardul, you say na कि Jofra Archer, even if Jofra Archer doesn't perform well, they have brought two good quality backups in Adam Mile and Nandre Burger, Adam and Milne is Nandre good. Burger is quite, even Nandre Burger is a good bowler, मतलब उसको Nandre Burger is good, he's but does RR management have the steel to drop Jofra Archer, to bring in Nandre Burger, to maybe, let's say, bring in Donovan Ferreira, yeah. like, make like But a, Shardul, bold Ferreira squad. is Did yeah, Ferreira is like to like replacement for Hetmeyer. like Plus I'm plus he saying can that bowl. only. Yeah, I'm saying that only because he's a like to like, not even like to like. Do they have the accountability to throw out first in the early stage? Do they have the steel to just like say, ki ha, we can't take you guys in, like Archer and Hetmeyer. We can't take you in. We are bringing a like for like replacements so that they can get a chance to prove yeah, themselves early on. yeah. Do they have it in them? If they have, wonderful. If they don't, then the Shardul, yeah, last year yeah, you are situation is right. going to repeat Yeah. only. And Shardul, even if you say na ki, okay, okay, I'll say Jofra Archer is a literal liability for Rajasthan in terms of his Correct, fitness. Okay, but still correct, they have got Indian pacers, like they have Kuldeep Singh, Yudhvir Singh, who can be like तीन fast bowler है जो Indian है, and then they can bring in Sam Curran as an extra option. मतलब even if they drop आर्चर completely ना, they won't be like, उनको कुछ great ऐसा नुकसान नहीं होगा which happened last year. correct. I just want to see whether RR has the see RR has the players, good players. They have good players, but I don't see them combining together to make RR win from crucial situations, just like last time around. Now they have got Vignesh Puthur. Now they have got Yeah, Ravindra Jadeja. Now they have got that audaciousness in them. So now they should capitalize on picking the boldest squad out of these yeah, people that they Shardul. have. But to Sunna, whatever it is, their top 5 to top 6 are fixed. पहले सूर्यवंशी Yeah, yeah. जायसवाल, फिर रियान पराग, उसके बाद ध्रुव जुरेल, फिर जडेजा, सैम करन, हेटमायर स्लैश फरेरा, देन इट विल बी जोफ्रा आर्चर. सो सात इधर ही फिक्स हुए ना. So would Hetmeyer wicket keep, or would ध्रुव Dhruv जुरेल, Jurel keep? But no, ध्रुव last जुरेल. year, even though they had Jurel, they still kept in Hetmeyer for the wicket keeping, na? संजू सैमसन था ना. हाँ, संजू सैमसन का रिप्लेसमेंट था हेटमायर नहीं था तो जुरेल था. या But Shardul, to be seriously honest, okay, I would be wrong in my opinion, but Shardul, okay, this. I think this should be this. As I say about Vaibhav Suryavanshi, okay, Hmm. he is not your dependent opener for sure. Correct, for sure. क्या ओके. एंड अगर किसी मैच में यू आर लाइक 12 for 3, so are you prepared for a situation like that? Because Shardul, you know, Jaiswal also carries the same amount of क्या बोलते हैं उसको, मेंटेलिटी की वो शॉट मारने जाता है और वो आउट होता है. Correct. So if you lose your openers within the first 2 overs,
फिर it will be pressure on the lower orders, middle and lower order, which this Correct. current squad cannot sustain. Cannot, absolutely cannot. मतलब Because जैसा केकेआर में राहुल त्रिपाठी मनीष पांडे है टू गेट इन टू कैरी केकेआर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विच हैपेंड लास्ट सीजन in Mumbai only, I guess, Shardul. It was yeah, KKR were something like 40 for 4 or 5. Then Manish Pandey came in as an impact player. And he kind of secured the, stabilized the innings, and then they reached to a total of 120 or 130, something like that. So that kind correct. of stability they don't have in the lineup. In like what we say, tough times, like losing openers early, like 50 for 3, 50 for 4, in that criteria. And which will happen more, I'm more likely to say कि out of those 14-15 matches जो होते हैं लीग स्टेज में, आई एम श्योर कि एटलीस्ट 6 to 7, एटलीस्ट 5 to 6 मैचेस में देर वन ऑफ देयर ओपनर्स इज गोना फेल, Easily, and easily, they'll easily. definitely lose 2 or 3 wickets in power play. This is a very volatile team in my opinion because इधर stability नहीं है. And there is no person who will be like, हाँ मैं 45 बॉल खेलूंगा, मैं 50 बॉल खेलूंगा. Everybody in here ना, except for like the only person in this squad that I can see actually doing that is Ravindra Jadeja. Yeah, Honestly for speaking, sure. Even Shardul Jadeja, and maybe I would say Dhruv Jurel. Because Dhruv Jurel. Jurel, yeah, he has been a good test player. Matlab, he can just stay at one end and he can play. He can rotate the strike and all that stuff. So it will be crucial of for Dhruv Jurel and Jadeja. Yeah, And they will yeah, be the players who will save RR in situations of collapse. correct, correct. So I think this squad is worth review now. So Areen, what do you have to say out of 10? Out of 10 कितना देगा स्क्वाड को? Maybe 7.5. I would give 7 on 10. Just Just because because yeah. Bol. बहुत inexperienced है. मतलब this is one of the most inexperienced squad, one of the most rash squads, volatile squads, and this like अभी लाया है उन्होंने मैच विनिंग मेंटालिटी यहाँ पे, बट नहीं है इनफ. This I just Yeah, don't true. think this squad Yeah. has enough, guda. Yeah. But okay, Shardul, I have given them 7.5 because out of the whole squad, it is Jadeja, Sam Curran, Jaiswal, and I would say नहीं इतने ही 4 प्लेयर है, उनके ही कंधों पे ये टीम है, टू बी सीरियसली ऑनेस्ट. हाँ, और वो चारों है, फॉर्म में है. और एंड फॉर्म का इवन इफ कोई पीपल से कि they have तुषार देशपांडे, they have संदीप शर्मा, बट ब्रो ओके संदीप शर्मा इज अ गोटेड बॉलर, आई अग्री, बट तुषार देशपांडे का क्या ना, you have you तुषार have देश Indian options, but they are not that much of high level. the thing is तुषार देशपांडे can take 4 wickets for 60 runs. He can do Yeah, something like that. their So their pace, very their pace unreliable. department, pace department तो sorted है, spin का भी I would say sorted है, but it comes down to their batting, how they'll perform. बाकी कुछ Yeah. नहीं है. So this team is over and we move on to my favorite team of all time. Visalpodu Chennai Super Kings goated squad, I would say, because look at the squad. Look at the squad. Look at the squad. I Youngster score. youngster this squad is feeling like a church because there is one 46-year-old and there are 14-year-old kids. Wow. This squad
I this squad is the exact replica of that video where Modi ji sits with the kids to learn new concepts. Wow, शार्दुल, what a I squad! completely, yeah, I completely agree with you. भाई क्या है ये? Okay, I know CSK management is thinking about future, and it most probably be Thala Dhoni's last IPL, but that doesn't mean कि you have to pick a young keeper for whooping काहे 14 का CR. फ्यूचर मेरे को बता, काहे का फ्यूचर? ब्रो तीन तीन ऐसा नहीं, साल ओके. में मेगा सुन 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 3 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, लौड़े का फ्यूचर, कहाँ का फ्यूचर भाई? वेयर डू वी सी वेयर डू वी सी फ्यूचर इन आईपीएल? मेरे को भाई ऑनेस्टली भाई बता। देव, भाई क्या किया? आई सीरियसली डोंट नो व्हाट्स बिहाइंड दैट. आई भाई क्या किया? आई डोंट नो, बट इट लुक्स डिसेंट स्क्वाड. मतलब आई वुड लव टू स्पीक अबाउट देम फॉर 5 minutes. दैट्स व्हाट दे डिजर्व, शार्दुल, सीरियसली. मतलब यू हैड नियरली 40 CR, राइट? 40 या फोर्टी कितने थ्री थे? सीआर भाई फोर्टी फोर्टी थ्री सी थ्री आर सीआर में तुम ले लेते क्विंटन डिकॉक को, खेल लेता तो 2 साल. आई डोंट नो, मुझे बता कौन से, मतलब who the hell was planning कि we have to splash 14 fucking crores on 2 youngsters? I have no idea. Shardul, okay, 14 we CR. won't. Yeah, listen, Shardul, we won't say that the picks were bad, but I would say for that amount, it was okay if they would have got 10 CR or 8 CR, but 40 for both of them in total is pretty. Okay, it all depends on them कि they will have the, first of all it will, okay, शार्दुल क्या होगा, तुझे तुझे बताता हूँ मैं. First of all they will have a pressure कि they are playing IPL. Second, it will be the money bag which they have got. How are they going to Exactly. perform even if they're A class and higher class crazy as एकदम टॉप लेवल के प्लेयर है इन डोमेस्टिक? भाई पहले सीजन में नहीं हो सकता. And okay, you नहीं हो have सकता. got Sanju Samson. फिर why were you supposed to go for another keeper? And ऐसा भी नहीं है कि they don't have batting depth. They have good amount Exactly. of batting depth. I have no idea where this squad is coming from, where this squad will go. I just know for a fact, Ayush Matre and Ruturaj Gaikwad will open, definitely. Yeah. Sanju उसके Samson बाद at इनेट 1. थ्री, सॉरी 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 सॉरी, फिर आयुष मात्रा नहीं. संजू सैमसन ओपन Yeah, करेंगे. exact. हाँ, इनेट 3 Gaikwad went ऋतुराज down. गायकवाड़, या Then इनेट Brevis. 4 ब्रेविस, Brevis. इनेट फिर 5 आएगा दुबे. शिवम दुबे. करेक्ट. देन आएगा अपना भाई सरफराज खान. किधर आएगा? Will he? मैथ्यू शॉट आएगा. और मैथ्यू शॉट या अकील बट हाँ हुसैन? बेर, आई थिंक मैथ्यू शॉट. मैथ्यू शॉट. बट नहीं ब्रो, अकील मैथ्यू शॉट. हुसैन बोल स्पिन ना. ये ऑलराउंडर है ना वो. वेट, मैथ्यू शॉट में अलग, रुक मैं अलग बोल रहा था. ब्रो मैथ्यू Am I शॉट ये confusing? बैट्समैन वाला है. ये बैट्समैन ही बॉलर है वाला ना, मैथ्यू हाँ. शॉट है. बॉलर है या आई वाज बैट्समैन है ये? कंफ्यूजिंग हिम विद डार्सी शॉट. सॉरी. ओ या मैथ्यू शॉट तो हाँ, मैथ्यू बैट्समैन ही शॉट. पर वो शार्दुल इज बैट्समैन ही है. 4 नंबर या 5 नंबर का है वो. अरे वो फिनिश भी करता है, बहुत बहुत क्रेजी वो. अच्छा साइनिंग है. पर शार्दुल, okay, I would like to piss you off again. Okay, by leaving a high quality all format player and a goated spinner like Jadeja, and you have got या, two replacements who are Shreyas Gopal and Rahul Chahar. What's your take on that? ओ माय गॉड, क्रेजी, बहुत बढ़िया. दिस इज प्लानिंग एट इट्स पीक, गाइज. we can't think like CSK because we don't want to. Sorry, we can't शार्दुल, think. शार्दुल, मुझे बता तू. अपार्ट फ्रॉम नूर अहमद, डू यू थिंक CSK can ball good amount of spin in their own home ground? They will Do पक्का you
Pakka they will bring in Shreyas Gopal and all of those spin bowlers that they have signed, but बिकॉज they शार्दुल are शार्दुल not going to. होम गेम में वो पक्का इम्पैक्ट प्लेयर स्पिनर ही होगा, बिकॉज दे कांट हाँ, अफोर्ड टू राहुल ब्रिंग सर ने इन तो 3 श्रेयस स्पिनर्स, गोपाल होगा, करेक्ट। बिकॉज राहुल बिकॉज सर ने उनका तो पेस श्रेयस अटैक गोपाल, किया। और नेथन एलिस तो पक्का खेलेगा, अंशुल कंबोज खेलेगा, खलील अहमद खेलेगा, करेक्ट मुकेश करेक्ट चौधरी, करेक्ट या फिर मुकेश चौधरी का पता नहीं, पर खलील अहमद और अंशुल कंबोज तो खेलेंगे। करेक्ट। एंड आउट ऑफ दैट आई हैव अ गुड क्वेश्चन, वेयर विल थाला प्ले? थाला एट नंबर 8 और इन नंबर 9? एट नाइन इन एट नाइन इन एट नाइन इन ऑडियंस एट की 9? चड्डियां गीली हो रही है भेंचोत, 4 4 बॉल खेल के जा रहा है थाला। It's going to be that way only. Shardul, It's but going to this be. is, but okay, as a MS Dhoni fan, I'm not saying I'm a good CSK fan, but as Dhoni fan, भाई okay, it is a good thing कि 4 बॉल आता है, but I think it should be respectable कि भाई आता है तो खेलने दो। Don't bring him in a situation कि 30 रन बचे और 8 बॉल है। Please don't do like that. Actually, that's the kind of situation he's built for. But the thing is, नहीं अभी हो वो रहा, एज नहीं नहीं होगा। बचा है उससे। नहीं होगा, नहीं This होगा। is Shardul, this is the last for sure. I can sense it. मेरा पोता होगा ना, वो भी थाला थाला करके चिल्लाएगा, मैं बता रहा हूँ भाई। But मैं Shardul, सीरियसली, I'll seriously tell you, their pace attack is solid. मतलब बट pace इट्स attack top class रिडिकुलस। है। व्हाई शार्दुल, जेमी व्हाई डू ओवरटन, दे? मैट हेनरी, नेथन एलिस। मेरे को ये बता, सी, एनी एनी स्क्वाड इन द वर्ल्ड, ठीक है, एनी स्क्वाड, मैं सिर्फ अपनी नहीं बात, दे ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन होम एडवांटेज। ये कौन सा दिमाग लगा कि इन्होंने घर के ऊपर पेस का एडवांटेज ज्यादा रखा है ओवर स्पिन? आई हैव नो Yeah. आइडिया। Yeah, they actually should have gone for a couple of spinners. मतलब सुन शार्दुल, मैट हेनरी और मैथ्यू शॉट का कंबाइन अमाउंट में एक अच्छा इंडियन स्पिनर आ जाता पक्का, या फिर वो ट्रेड कर लेते। राइट। You सी, had इवन that दे हैव window, ब्रॉट गुरजापनीत। you traded players, so why you didn't trade a good spinner? And I have no idea why they did not, like, see, like you told, why didn't they go for Quinton de Kock? Bro, left-hander. You have got a left-hander beast of an opener. You are not taking him at Chidambaram, bro. He would have caused ruckus. He would have Shardul, caused ruckus. as you mentioned left-hander, there are only 2 left-hander. हाँ, शिवम दुबे एंड आयुष मात्र लेफ्टी नहीं, आयुष मात्र इज राइटी। नहीं नहीं, अरे राइटी राइटी। एक ही लेफ्टी। वाओ शार्दुल, डिड यू सी द कनेक्शन करेक्ट। from 6 lefties? See the two ideologies from Indian team having 4 to 5 left arm, like left batsman, to CSK carrying only one left-handed batsman. Peak. Is I have no idea how this team is going to work. I have no idea how the youngsters are going to perform under pressure. I have no idea why this squad is the way it is. See, I get it. I get it. You have so, और वो किस बात पे खुश हो रहे? I have no idea why any team in this world, when they are playing IPL on Indian conditions, should be happy with 3 overseas bowlers, 3 overseas pace bowlers. मेरे को पता, मैं एलिस, ठीक है, मैं एलिस, ओवरटन, हेनरी लेके करेगा क्या? खेलना तो खेलेगा तो एक ही, 2 खेलेंगे मैक्स टू मैक्स। चल, मैं बेनिफिट नहीं ऑफ द शार्दुल, डाउट 2 खेल। सुन ब्रेविस नूर अहमद, ये 2 तो हो गए, और 2 का स्पॉट है, हाँ, एक अकील हुसैन लेगा।
एक कंपल्सरी. अकील हुसैन, हाँ, एक अकील हुसैन लेगा, राइट. either it would be it either it would be जेमी ओवरटन या फिर मैट हेनरी. बट मैट हेनरी विल बी मोस्ट लाइकली, या फिर वो सिर्फ तीन के साथ खेलेंगे. आई हैव नो आइडिया बिकॉज सी एस के वर्क्स विथ ओनली 3 ओवरसीज टू बी ऑनेस्ट. या एंड हु कैप्टन धोनी है, कौन है? धोनी है कैप्टन. संजू 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 नहीं, ऋतुराज गायकवाड़. गायकवाड़ ही होगा ना कैप्टन. इट वोंट बी संजू. आई हैव नो आइडिया. गायकवाड़ शुड बी द कैप्टन मे बी. बिकॉज शार्दुल, आई सीरियसली फील ना कि संजू सैमसंग इज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट फॉर एम एस धोनी. अरे संजू सैमसन को खेलना ही चाहिए. ही इज द मोस्ट इन्फो. और अगर संजू सैमसन नहीं खेला ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, वो तो ओ खेलेगा माय शार्दुल. गॉड, मैं तो भाई मैं भग लूंगा भाई, शार्दुल मैं सुन, दुनिया से ये जो सुन शार्दुल, ये जो फर्स्ट रो है ना, ऋतुराज गायकवाड़ टू एम एस धोनी, इनमें से तू सिर्फ प्रशांत वीर का सिर्फ नाम हटा दे या फिर कार्तिक शर्मा का नाम हटा दे. ये पूरी की पूरी रो खेलने वाली है. करे भाई. बट टेल मी वेरी ऑनेस्टली, Dewald Brevis is working on a salary of 2.2 CR, and now this 19-year-old Karthik Sharma takes 14.2 CR. How is this justified? In Bro, what it's not world it is okay. justified? I know it is not justified, but Shardul, okay, to be seriously honest, the thing which you are saying कि 40 crore on 2 youngsters, it will be interesting to see कि ये दोनों कैसे खेलेंगे. And I'm sure अरे वही तो CSK will be also CSK will be also keen to play them in at least first 4 matches. मतलब पहले 4 मैचेस में तो इनका दर्शन होगा हमें फॉर श्योर. अरे दर्शन होने दे. मेरे को उसका नहीं है. ये बच्चे खेलेंगे कैसे, मेरे को ये बताओ. अरे द थिंग इज, see, when you have that big a price tag on, on such a, like, at such a Yeah, small age, bhai, it is very very tough. It is एग्जैक्टली very वही. tough. ये वही वही भाई या उन वही तो दोनों के बोला मैं. विकिपीडिया पेजेस नहीं है. उन दोनों के विकिपीडिया पेजेस नहीं है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. या दे डोंट इवन हैव वही तो. बिचारों इट के इज विकिपीडिया पेज. सीरियसली गोना बी इशू ऑफ प्रेशर. एंड वो बोला, मैं स्टार्ट में ही बोला कि वो आईपीएल का सीन है, प्लस दे हैव अ बिग मनी ऑन देयर बैक एंड ऑल दैट स्टफ. सो इट इज गोना बी है कि बट व्हाट वी से हिट और मिस. बट इट शुड हिट बिकॉज बहुत पैसा खर्च किया है इन्होंने. एटलीस्ट दैट शुड अरे हैपन. इट शुड हिट, बट वुड इट हिट, वो बता. या Because बट शार्दुल, all of the ओवरऑल, times. या नहीं नहीं सुन ना, ओवरऑल इफ वी स्पीक ना, this apart from spending those 40 cr, like, yeah, apart from spending those 40 cr, they have done pretty much, like, overall. वो देख ना तू, if you remove that aspect of just that कि young players है and all that stuff, their core 15 is perfect. मतलब है, like, at least they can just try to reach qualifier playoffs. ना 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 ना, मेरे को नहीं लग रहा. नो. बट शार्दुल नहीं, ऐसा नहीं है. आई टेल यू ना, शिवम दुबे और संजू सैमसंग वर्ल्ड कप खेलने के बाद आ रहा है. बाय द वे, एंड मेजोरिटी, they complete the justice trio, हाँ, by the या आई एग्री. ऋतुराज गायकवाड़, संजू संजू सैमसन सैमसन एंड and सरफराज सरफराज खान. खान. See, I want to know how they play Sarfaraz Khan, because the way that they'll play Sarfaraz Khan will determine whether they are going to go to the playoffs or not. Yeah, but overall I want to Shardul, see if you what. ask me na, yeah, if you ask me, I would give 8.5. Overall squad is good, and apart from youngsters and lack of spin department, I am happy with this much amount of squad. I am going to give it 6.5 out of 10. Okay. Not because of bias. You know why I am saying शार्दुल so. सुनना गिव 7 ना, थाला फॉर अ रीजन हो जाएगा. नहीं नहीं, मेरे को नहीं देना. देख, अगर अपन 8, तू अगर 8.5 दे रहा है,
अब मैं अगर 6.5 दे रहे तो मिल के हो जाता है 7.5, तो 7 आ ही गया bro. या थाला फॉर अ रीजन. थाला फॉर आधा रीजन. बट या 0.5. nah man, I don't believe in this squad. By the So, way, yeah, yes. Yeah. the next Yeah. team that we have is Lucknow Lucknow Super Super Giants. 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 चलो मेरा खाली है वर्ड पर ठीक है चल. And let's talk about Arjun Tendulkar. Come on, let's talk about my boy Arjun Tendulkar. Come on. Finally, he has escaped prison. Sorry, Mumbai Indians. But Shardul, he used to My play well. boy, my boy is don't. My boy is going to dominate in LSG. Yeah. I just for the memes because I see. I know Mumbai is going to like crush it in the IPL, but just for memes, I want to see LSG versus Mumbai Indians, and I want to होगा see होगा Arjun वो. Tendulkar bowling, and I want to Shardul. see he But play apart, well. yeah, apart from Arjun Tendulkar, LSG squad looks pretty dominating, huh? Pretty Yeah, dominating. yeah, pretty dominating. मतलब बैटिंग पावर Just the हाउस, बॉलिंग, या I don't rely बॉलिंग on the एक्सपीरियंस्ड captaincy. है. That's the only thing. ऋषभ पंत या फिर निकोलस पूरन. दैट्स इट, दो ही नहीं नहीं ऑप्शन है. मेरे को वही तो नहीं ना मेरे को वही तो है, वही तो दिक्कत है कि वो अच्छे नहीं करेंगे, वो पता है. बट शार्दुल, आई टेल यू, वो अपना लखनऊ को वो वापस वो तीन तीन इनका 3 ओवरसीज प्लेयर का वापस इशू होने वाला है. हाँ ऑब्वियसली. बिकॉज सुन ना, पंत पंत नहीं, अपना पूरन, मार्श और एडन मार्करम, ये 3 ओवरसीज हो गए. एंड फोर्थ इट करेक्ट विल बी इधर नॉर्किया. वो नॉर्किया ही आएगा शायद, डिपेंडिंग अपॉन हिज फिटनेस, या फिर ब्रेट्सकी आएगा. ब्रो. उन्होंने मेरे को समझ ही नहीं रहा है उन्होंने क्या लॉजिक पे उन्होंने जॉश इंग्लिश को लिया. चल ठीक है, लेकिन हाँ मतलब जॉश इंग्लिश खेलेगा ही नहीं ना. ऋषभ पंत अगर विकेट नहीं कीपर है तो खेलेगा. आई विल जॉश इंग्लिश नहीं बट खेलेगा. शार्दुल, they have released David Miller, and they don't have a good which number is a 5 or a strong which is number a 5. blunder in my opinion. Yeah, इससे इससे अच्छा Which they is a should have blunder. released someone like Rishabh Pant itself. वाओ वाओ वाओ. भाई कैप्टन को ही भाई टीम से पंत, निकाल दिया ब्रो. भाई भाई पंत, सीरियसली ब्रो, पंत खेला भी नहीं. उसका भाई पूरा का पूरा इंटरनेशनल करियर की ही थोड़ी लग गई है. या लग गई है इज लेजिट अ वर्ड. आई वोंट शाय अवे फ्रॉम दैट. Honestly, I'm speaking one very controversial statement. Rishabh Pant cannot be a T20 player. He can be a T20 strategist in my opinion. Because वो ग्राउंड पे कीड़े कर सकता है. I can understand that. I can understand he can do that. But a proper captains, I don't know. But या Breedsga won't play. I think Breedsga won't play T20. Breedsga is like a stabilizer, and I believe that they will go for obviously Puran Marsh and Wanindu will obviously be there, या no doubt. और मार्करम हो गए 4. Markram भी नहीं, Puran ब्रो Marsh ब्रो Hasaranga मार्करम इज भी ब्रो. not किया भाई मार्करम ने not किया. T20 सीरीज में धोया है अपने को. ही प्लेड अरे प्रिटी लेकिन गुड. वो बट एलएस गोइंग का. बट शार्दुल, टू बी सीरियसली ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम बैट्समैन ना, इनकी अलग बॉलिंग 11 भी हो जाएगी. हाँ बॉलिंग 11 हो जाएगा आराम से. ब्रो भाई आठ आई आठ वांट टू सी पेसिंग प्रिंस ऑप्शन. यादव. आई ब्रो वांट टू सी 8, प्रिंस यादव. सुन, 8 पेसर ऑप्शन है. मयंक यादव, शमी, अवेश खान, मोहसिन खान, देन दे हैव प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्किया.
और कौन है? हिम्मत सिंह, भाई आकाश सिंह। समाद भी भूल गया क्या? अब्दुल समाद भी है। अब्दुल समद पेसर नहीं है, वो स्पिनर है। अब्दुल समाद स्पिनर नहीं है, नहीं। या वेट स्पिनर है। वेट। अब्दुल, अरे हाँ हाँ, राइट 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 राइट। बट अब्दुल समाद ना वो फिनिशर अच्छा है, ही शुड प्ले मोर, आई वो बिलीव। खेलेगा, सुन सुन शार्दुल। मार्श मार्करम, पूरन पंत, फिर आएगा नीचे समाद। ओके। मार्च मार्करम ब्रो, टू ओवरसीज ओपनर, आर यू सीरियस? भाई शार्दुल, सुन ना, दे कैन डू इम्पैक्ट प्लेयर ना। दे कैन ब्रिंग अ बॉलर, लाइक ओवरसीज बॉलर इन द फील्डिंग ना। हाँ, दे कैन डू दैट। हाँ, फिर क्या? फिर दे गो ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर दैट बैट्समैन ओनली ना। देन दे ऑल्सो हैव ऑप्शन टू ब्रिंग इन हसरंगा इन द टीम, एंड देन इम्पैक्ट मे बी, bring remove Mitchell Marsh and then bring Hendrik Nortje if required. कुड कैसा बी। भी उनका वो उनको वो है, वो बेनिफिट है। दे कैन इजीली यूज देयर ओवरसीज ऑप्शन बाय दैट ब्रो इम्पैक्ट प्लेयर थिंग। स्पिन इनका बहुत सॉर्टेड है हाँ, लेकिन स्पिन भी है या सॉर्टेड। ब्रो दिग्वे शराटी एंड वनिंदु हसरंगा। और शहबाज अहमद। शहबाज अहमद, बट शहबाज अहमद इज ठीक ठाक, ठीक है। सपोर्ट इवन स्पिनर शार्दुल, इज एम गुड। सिद्धार्थ, एम सिद्धार्थ। ओ या मणिमोहन भाई एम सिद्धार्थ भी है सिद्धार्थ ने ना। फाड़ी थी भाई, फाड़ा था लास्ट ईयर। करेक्ट। But Shardul, as we speak about the Lucknow bowling, there are more injured players. Like most of the players are likely unfit. You have Avesh Khan, Mohsin Khan unfit, Mayank Yadav unfit. चार तो इधर ही हो गए ना इनके अनफिट प्लेयर। करेक्ट। तो इज इट डिपेंड्स अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, will they be available or not, but equally they have that much of backup for them as well, so that won't hurt them a lot जितना बाकी और या टीम को अगर इंजुरी से होगा तो। बट प्रिटी सॉलिड करेक्ट स्क्वाड, करेक्ट। मतलब if प्रीटी शार्दुल, सॉलिड स्क्वाड। if their batting goes gala like last year and their bowling goes better, it will be peak for them seriously, because भाई शमी है उनके पास, like शमी will करेक्ट। lead the pack. ऑफ And they कोर्स। have all variety of pacers, from as fast bowler to the slowest fast bowler. And I'm not talking about Arjun Tendulkar as slow bowler. I'm just talking as a, ब्रो अर्जुन because तेंदुलकर इज गुड। अर्जुन तेंदुलकर इज गुड। ही इज गोना भाई किल उसको इट नहीं दिस मिलेगा ईयर, आई चांस। विश इट। he's he अरे won't be there मिलेगा। for the 11 भाई, नहीं मिलेगा। अरे खेलेगा वो, लिख के ले ले, लिख के ले ले, खेलेगा। If he's Yeah, going to LSG, there is going to be a contract where it says that he will play one but Shardul, like a who lot of would have matches. imagined, who would have imagined कि the LSG management would give up on someone like Lord Shardul and bring in a goated player like Arjun Tendulkar. I have no words. I mean, hey भाई Vedya इससे is अच्छा the only word I can. भाई, is बट a steal for bringing in Shami, हाँ, they got a steal कि भाई correct, उन्होंने correct, शमी लाया। correct, 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 correct. But it will be like all That eyes is a on steal, Shami bro. कि how he'll bowl. Correct. But वो अरे करेगा वो bowling आराम से। So Shardul, how much would you rate them? I would rate LSG squad 8 on 10. Good squad. Good, very good squad. Yeah, I would give 8 on 5. 8 on 5 or 9 I would say. And 8.5. Shardul, this, yeah, 9 I would say, and this is a squad who can technically go into the playoff. टेक्निकली They हर have, स्क्वाड प्लेऑफ में जा सकता है ब्रो, पर प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू बी एक्यूरेट विद आवर प्रिडिक्शन, नहीं तो बहुत ट्रोलिंग होगी। yeah, yeah, fair enough. बहुत गाड़ मारेंगे लोग। भाई for real. So, लास्ट स्क्वाड that we have is a squad that does not even need to be discussed, but wow,
Wow, just wow. Wow, Bhai wow. Shardul, this is Australia 11. This is Australia 11. Come on. But Shardul, do you think it will be another finale for Punjab this year? Next year, rather, No, 2026? no. Na? Eliminator knocked out. I think they will be knocked out in the eliminator. Let's see. Because every box has been ticked. Matlab, right from fast अरे bowlers to परफेक्ट स्क्वाड है, spinners. कोई कोई है ही Khatam. नहीं इसमें. What a squad though. Why I love this squad. See, they have brought in a lot of Australians, but the thing is, this is a squad that does not need repairing. अरे क्या squad है. See, Suryan Yeah. Shedge, all domestic talent is ticked. All Yeah. international talent is Mushir ticked. Khan, yeah. Captaincy is बोल ही नहीं सकता भाई. कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कैप्टनसी के पेस बारे में. पेस डिपार्टमेंट भी अच्छा है, स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, फिनिशिंग भी And अच्छी है, ओपनिंग भी अच्छी है, सब अच्छा है. and Marco Jansen is on peak bhai. Marco Jansen is a Yeah. brilliant addition to this. Yeah. But Shardul, I would Actually, not an seriously say addition, na, but ठीक है भाई. yeah, I would seriously say Marco Youngson, लोकी फर्ग्यूसन और अजमतुल्ला ओमरजई ये तीन ही है प्रोमिनेंट ओवरसीज और स्टॉइनिस. Yes. I don't think someone like Cooper Conley or Mitchell Owen would play. भाई Cooper सॉर्टेड है Connolly इनका. can experimented, but see they क्यों have ticked all the भाई boxes. जरूरत See, ही नहीं है ना. देर इज नो नीड. भाई हरप्रीत ब्रार एंड चहल in the spin, क्या है ही नहीं इसमें. See, there is सब भाई no need of. सब टिकट है, सब टिकट है. या फिनिशिंग में शशांक सिंह है इन लोग के पास. मिडल ऑर्डर संभालने के लिए निहाल वधेरा है. वडेरा है. या ओपनर में प्रभ सिमरन प्रियांश है, श्रेयस अय्यर या है. बॉलिंग में अर्शदीप सिंह है, मार्को एंसन युजवेंद्र है, चहल स्टॉइनिस है. है, युजवेंद्र, मतलब देयर इज सब है. नथिंग. सब है. फील्डिंग भी सॉर्टेड है भाई. द थिंग इज, या इसमें कोई है. एंड इवन दे हैव नॉट, सी दे दे जस्ट मुंबई एंड पीबीके स्क्वाड वाले जो लोग हैं ना, दे वर द मोस्ट सिक्योर पीपल ड्यूरिंग द या ऑक्शन. ऑक्शन. सो नॉट गोटेड इवन स्क्वाड. लाइक इतना भी रियल गोटेड स्क्वाड. गोटेड स्क्वाड क्या. रियल गोटेड स्क्वाड. गुड स्क्वाड. But they would reach the playoffs though. My prediction या is. प्लेऑफ So प्लेऑफ now शुड let's बी. make the predictions. Then now let's make the predictions for the playoffs. या टॉप 4 शार्दुल, गो And फॉर इट. इसके लिए रुको.